नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंटलाइंस में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 20 फरवरी को दूसरे CII इंडिया यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में दर्शकों को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ऋग्वेद और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बात की। उन्होंने हिंदू देवता इंद्र के बारे में बात की, जिन्हें वज्र के देवता के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य युद्ध छोड़ना नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता, वज्र के देवता और कई मायनों में युद्ध के देवता भी हैं। हम शक्ति को जानते थे और आप उस तरह की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी का निर्माण जो संघर्ष से उत्पन्न हुआ है। भारत में दो परंपराएं हैं। एक तो महाभारत में युद्ध कुछ प्रकार में रोमांचक, गंभीर, लेकिन एक खेल, एक धार्मिक कर्तव्य है। हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं और जब हम थे तब हम आज जितने आशावादी रूप से सभ्य नहीं थे। हर संस्कृति ने युद्ध की आवश्यकता को स्वीकार किया क्योंकि स्थानों पर विजय प्राप्त की गई, लोगों को कष्ट सहना पड़ा, ऐसे इतिहास जो कभी नहीं लिखे गए थे। Let me end where I started by saying our goal is not, of course, to wage war. You know, in the Rig Veda, there's Indra, the most powerful god, the god of thunder, and in many ways was the god of war too. We knew the power, and you can feel the power of that kind of primal creation of the earth that came out of conflict. And there's two traditions in India, one that's in the Mahabharata of war being something kind of exciting, grim, but a sport, and even religious duty. We know that well, and when we were not as hopefully civilized as we are today, every culture embraced the necessity of war as places were conquered, as people suffered, histories that were never written. But there's a second school of thought from the Sastra, which that long before von Clausewitz said this, literally stated that war was a continuation of politics by other means. Over 2,000 years before that we study in our war colleges, like so much you discover in India, was actually written here first. And in the Jain tradition, which kind of draws from that, I would say, in the Nitivakyamrta, there is a quote that I want to end with, two quotes. One, it says, if you can gain your desire to end with sugar, why use poison? And it talks about the idea of warfare often being like throwing ghee on the fire. We think it will put it out, but it only inflames it further. Let us be clear why we are here. As from the Middle East to Europe, Africa, which hardly gets a mention, war is a horrible thing. The warfighter knows that the most, has had the brother or sister who has fallen in battle. So in our excitement to create this relationship, let us always keep in mind that it is safeguarding that peace, preserving that peace, ensuring that peace, deterring that war, defending that peace, that ultimately is our goal together. फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।